So the next very important salient feature is federal system with unitary bias. Well, the Constitution of India establishes a federal system of government. It contains all the usual features of the federation vis-a-vis two government, divisions of power, written constitution, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent judiciary, and bicameralism. So when we talk about federal system with unitary bias, it basically says that yes, the Constitution of India has established federal system of government, and therefore it contains all the powers which normally we have in a federation, such as two governments. We have division of powers between the state and center. We have written constitution. Constitution is the supreme in all the aspects. Yes, we have discussed about that. Our constitution has some rigidity, it has independent judiciary, and it provides the scope of bicameralism. Now, having said this, that federal system is in federal nature, yet it is also unitary bias. Now, when we say unitary bias, it basically talks about that federal system is there, but end of the day, it is unitary features of the constitution which are more important, and therefore the unitary features are strong government, strong center, single constitution, integrated judiciary, appointment of the state governors by the center, all India services, emergency provisions are always with the center, and so on. So the point which I am trying to make over here is that our federal system may be in a federal nature, but end of the day, it is always unitary biased. It is always a unitary system wherein all the powers actually are with the central government, and therefore we have a strong center, we have single constitution. Although judiciary might be independent, but it is again integrated. All the appointments of the state governors are not done by the state but by the center. We have all India services controlled by one authority, Union Public Service Commission. And as far as emergency provisions are concerned, it is always with the center. That means state does not have any role when it comes to declaring any emergency provision, and so on. So here we need to understand that Indian Constitution is a federal system. It has given some power to the state, but when it comes to the actual powers, it is always with the center, and therefore our federal system is with unitary bias. जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो चौथा जो फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है। इसका कहने का ये मतलब है कि जब भारत का संविधान बना तब हमने फेडरल सिस्टम की नींव रखी थी और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट किया था, और इस फेडरल सिस्टम के तहत दो सरकारें बनी, एक सेंट्रल में और एक रिस्पेक्टिव स्टेट में। डिवीजन ऑफ पावर्स किए गए बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा रिजिड भी हो गया ताकि वो आसानी से ना बदले और इसका कोई एडवांटेज ना ले। इसी तरह आगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी बनाया गया और बायकैमरलिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छी बात है कि फेडरल सिस्टम को लागू किया, लेकिन फेडरल सिस्टम के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि उसका जो झुकाव है फेडरलिज्म का वो यूनिटरी के साइड में है। मतलब पेपर पे तो हम फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, हम फेडरल सिस्टम में ही रहते हैं, लेकिन अमूमन जो पावर जो रहते हैं वो हमेशा सेंट्रल के पास रहते हैं। इसलिए यूनिटरी जो फीचर्स रहे हैं वो रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा एक संविधान है, भले हमारे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेकिन वो इंटीग्रेटेड है। जब भी स्टेट गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर नहीं है, वो पावर सारे सेंट्रल को दिए गए हैं। जो हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अगेन सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए उसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं।
और वैसे ही जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो किसी स्टेट के पास नहीं है, वो सेंट्रल के पास है। इसीलिए जो चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है इस कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ फीचर।